Students, so in the previous videos we talked about the protoplast isolation, we talked about what is protoplast and its isolation, and then in just one last videos we talked about the protoplast fusion कि जब आप दो different species के दो different plants के protoplast को आपस में fuse करते हैं तो this is called protoplast fusion. उस lecture में हमने उसका flow chart दिया था that you need to isolate the protoplast from the both the parents, then you have to make them fuse, and then you have to do the selection of somatic hybrids, and then you are going for regeneration of the hybrids. तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल करेंगे. प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन पे ऑलरेडी हमारा क्लिप हो चुका है, बाकी के स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट इसमें जो सेकंड स्टेप है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यू हैव द स्पॉन्टेनियस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. यानी जब आप प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करते हैं स्पॉन्टेनियसली, देयर इज पॉसिबिलिटी विदाउट एनी स्टिमुलस दे विल फ्यूज. But normally what we are doing induced fusion. Induced fusion में ये है कि आप जो है तो उसके you are providing some external stimuli और stimulus के basis पे you are inducing the fusion. उसका ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये स्टिमुली करते कि दे लेट द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट species to come together कि वो एक दूसरे के साथ करीब हो, and then they disturb or they interfere with the membrane, the cytoplasmic membrane, ठीक है, to let them fuse कि वो जो है there is a fusion of cytoplasm and then the genetic material between the two protoplasts. ठीक है, तो ये स्टिमुली आपके पास केमिकल ट्रीटमेंट से हो सकते हैं जिसको हम केमोफ्यूजन बोलते हैं, या आपके पास जो है हो सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसको इलेक्ट्रोफ्यूजन कहते हैं. एंड इन सम केसेस यू कैन बेसिकली मैनिपुलेट मैनुअली मैकेनिकली द प्रोटोप्लास्ट, जिसके थ्रू जो है आप प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की तरफ जाएंगे. तो इसको आए देखते आगे. वी आर explaining one by one these. Okay, so in case of chemical methods or chemofusions, basically we are applying the stimulus in the form of certain chemicals. So we are adding certain chemicals which makes the protoplast fuse. होता क्या है कि basically these जो मैंने आपको बताया कि you have to bring the two protoplasts together and then you have to alter the membrane permeability to let the two cytoplasm in contact so that there is the fusion. So these chemicals, some of the chemicals which are used are like polyethylene glycol or sodium nitrate or calcium ions. These are basically the chemicals which interact with the membrane, the compounds or the substances on the membrane. They let them adhere. So the protoplasts, the two protoplasts, they are adhered, and then there is the fusion. There is the fusion or the mixing of the cytoplasm and genetic material between the protoplast. So they let the protoplast to adhere as well as they alter the membrane permeability. जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी को अल्टर करता है और उससे जो है तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होती है. ठीक है, जो केमिकल मेथड है बेसिकली इट्स कंसिडर्ड इनएक्सपेंसिव, बट ऑफ कोर्स जो इसमें आपके पास चांसेस सक्सेस रेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एंड देन इन सम केसेस इट कुड बी टॉक्सिक बिकॉज यू आर अप्लाइंग सम ऑफ दीज केमिकल्स. तो आप जो केमिकल इसमें ऐड करते हैं इट कुड हैव सम toxic impact on the protoplast itself. So chemical method is the method जिसमें हम different chemicals use करते हैं. Polyethylene glycol is one of the most used. ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपने limitations है जो कि depend करते हैं कि आप किस species के साथ काम कर रहे हैं और even in same species आप किस टिश्यू के साथ डील कर रहे हैं. जो प्रोटोप्लास्ट आप आइसोलेट कर रहे हैं वो आप किस टिश्यू से आइसोलेट करते हैं. ठीक है, तो यू विल हैव द वेरिएबिलिटी इन द फ्रीक्वेंसी. जो आपके पास सक्सेस फ्रीक्वेंसी है उसमें वेरिएबिलिटी होगी, एज वेल एज जो आपके पास पॉसिबिलिटी है साइटोटॉक्सिसिटी की. तो केमिकल मेथड से देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी, बट इट्स इनएक्सपेंसिव. ये वन ऑफ द इनएक्सपेंसिव मेथड है एंड यू कैन अडॉप्ट इजीली इन डिफरेंट लैब्स. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द केमिकल मेथड और द कीमोफ्यूजन जो आप प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए यूज करते हैं.
नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेसिकली यू प्रोवाइड सम इलेक्ट्रिकल फील्ड और उसकी वजह से बेसिकली यू alter the membrane permeability और उससे जो है तो you get the protoplast fusion. जो मैंने आपको कहा you need to bring the protoplast together, okay, and then you have to change the you have to alter the membrane permeability to get the fusion. So इसमें basically first we apply some low voltage. What does this low voltage basically, they let the cells, the protoplast to be in line. उसको जो है because they are moving towards the in response to this electrical field. ठीक है, तो उसकी वजह से they will line up and then you will apply some high voltage जो कि that will change the permeability of the membrane. तो जो प्रोटोप्लास्ट आपस में करीब होंगे, जो लाइन अप हुए होंगे, there will be the possibility कि उसमें जो है फ्यूजन हो जाए. इसमें जो आपके पास फ्यूजन के चांसेस है, फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसमें ज़्यादा है. तो नॉर्मली दिस इज़ वन ऑफ द प्रेफर मेथड, लेकिन वंस अगेन दैट डिपेंड्स कि आप किस स्पीशी में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और किस प्लांट पार्ट पे से आप प्रोटोप्लास्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसका कंसेप्ट ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेंगे. फर्स्ट आप लो वोल्टेज यूज़ करेंगे जिससे आप सेल्स को लाइन अप करेंगे और देन सेकेंडली आप हाई वोल्टेज यूज करेंगे जो कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को अल्टर करेगा और उससे जो है दैट विल लीड टू द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. सो इन दिस केस दिस इंड्यूस्ड फ्यूजन इज टू द स्टिमुलस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द सक्सेसफुल मेथड जो कि यूज होता है फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. Then in the mechanical method, there is the possibility that you can manipulate basically the protoplast directly under the microscope. तो इसमें आप करते क्या है कि that you will mechanically bring the protoplast together and then you will manipulate it with micro manipulators and you will let them fuse. Of course, you have to do it under the microscope and you need a lot of expertise in using the mechanical method. तो ये जो मेथड है इसमें आपके पास एक्सपर्टीज चाहिए, आपके पास वो माइक्रो मैनिपुलेटर्स और माइक्रोस्कोप्स चाहिए होते हैं जिसमें आप जो है यू कैन ब्रिंग द प्रोटोप्लास्ट टुगेदर एंड देन यू कैन लेट देम फ्यूज. ठीक है, तो दिस मेथड इज रिक्वायरिंग मोर एक्सपर्टीज ऑफ कोर्स कंपेयर टू द अदर टू मेथड्स. Okay, so if you look back at the flow chart, you have isolated the protoplast, you have done the protoplast fusion. Then the next step is to do the selection for the somatic hybrids. Basically, आपके पास होता क्या है? You can see in the diagram that you have the protoplast from species A and species B. You manipulate them together, but what happens after applying these stimuli? You will get either you will get different form of the protoplast. The first one will be the unfused protoplast, so of the species A and species B. So you have the protoplast जिसमें कोई fusion नहीं हुई, जिसमें कोई जो है you don't have any kind of fusion. सेकेंडली आपके पास वो प्रोटोप्लास्ट होंगे जिसमें ऑफ कोर्स फ्यूजन हुई है लेकिन वो फ्यूजन सेम स्पीशीज के या सेम पेरेंट के प्रोटोप्लास्ट की हुई है, तो उनको हम होमोकैरियोन्स बोलते हैं. दे हैव द सेम न्यूक्लियाई. ठीक है, यानी आपके पास फ्यूजन तो हुई है लेकिन आपके पास सेम स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन हुई है, तो दैट इज आल्सो नॉट डिजायरेबल फॉर अस. ठीक है, हम जो है तो चूंकि हमने दो डिफरेंट स्पीशीज को आपस में मिलाना था, तो होमोकैरियोन्स आर आल्सो नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट. Then you have the desirable one which is heterokaryons. ये वो fused protoplast है, वो somatic hybrids है जिसमें आपके पास दोनों स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हुए हों. ठीक है, तो इसको हेट्रो डिफरेंट कैरियन न्यूक्लियाई, तो इसको डिफरेंट जो आपके पास हेट्रोकैरियंस हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे. बेसिकली इसको हम हेट्रोकैरियंस बोलते हैं क्योंकि इसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं एंड दिस इज बेसिकली योर डिजायरेबल प्रोडक्ट और डिजायरेबल सोमेटिक हाइब्रिड. चूंकि आप प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करना चाहते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज के, सो यू दिस इज योर डिजायरेबल output. Acha, so we are interested in this heterokaryon which has the nuclei from both of the parents. Okay, अच्छा, अब ये हमारे पास जो भी आप मेथड यूज करते हैं, you have in this mixture you have the unfused protoplast, you have the homokaryons and you have the
हेट्रोकैरियोन्स। तो आपने उसमें से जो है हेट्रोकैरियोन्स को सेलेक्ट करना है। आपने उसको सेलेक्ट कैसे करना है, बेसिकली वो डिपेंड करेगा जो आपके पास पेरेंटल लाइंस है उसमें डिफरेंसेस क्या है। बेसिकली यू हैव टू लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू पेरेंट्स। अब केस टू केस इट में वेरी ऑफ कोर्स कि आपके पास दोनों पेरेंट्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या वो डिफरेंसेस आप प्रोटोप्लास्ट के लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या यू आर गोइंग टू डू सम साइटोमेट्रिक स्टडी और सम स्टेनिंग और यू हैव इवन टू यूज सम मोलिकुलर मार्कर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपके पास है ये दैट इज पॉसिबल कि आपके पास कोई मार्फोफिजियोलॉजिकल ट्रेड्स हो लाइक पिगमेंटेशन। इफ यू हैव सम काइंड ऑफ पिगमेंटेशन के एक जो आपके पास प्रोटोप्लास्ट है वो उसमें एक पिगमेंट है और जो दूसरे के प्रोटोप्लास्ट में दूसरा पिगमेंट है, so of course in the heterokaryon you have both the pigments and you can easily select the heterokaryon in that particular case. So if you are in such a case जिसमें आपके पास pigmentation different है दोनों parents में, तो you can easily select your heterokaryon based on the pigmentation. You can use some of the cytoplasmic traits. For example, there is possibility कि आपके पास कुछ studies में antibiotic resistance different होते हैं दोनों cytoplasm में, ठीक है, दोनों दोनों प्रोटोप्लास्ट में। तो जब आपके पास हेट्रोकैरियोन आते हैं उसमें चूंकि दोनों के साइटोप्लाज्म होते हैं, तो यू कैन यूज दीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ट्रेट्स। ठीक है, देयर मे बी सम स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक ट्रेट्स जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिड। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर द न्यूक्लियर स्ट्रेनिंग इन सम स्पेसिफिक मार्कर्स बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर जीनोम। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास वो मार्कर जो है वो सेग्रीगेट होने चाहिए दोनों पेरेंट्स में। यानी अगर दोनों पेरेंट्स में वही चीज सेम है, स्टेनिंग फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर स्टेनिंग सेम है या जो है तो मार्कर सेम है, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस यूज दीज मार्कर्स। लेकिन इफ दे हैव डिफरेंट staining pattern or different markers are present between the two parents, then you can use those markers for the selection of heterokaryons. तो मकसद ये है कि आपके पास जो आउटपुट आते हैं उसमें आपके पास अनफ्यूज सेल होते हैं, होमोकैरियोन्स होते हैं यानी जो कि फ्यूज सेल होते हैं लेकिन सेम ही स्पीशीज या सेम ही पेरेंट के होते हैं, और आपके पास हेटेरोकैरियोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज से आए होते हैं। तो आपको हेटेरोकैरियोन्स चाहिए और उसको आपने सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। तो that will be basically your output, यानी जो आपके पास जो हेटेरोकैरियन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप उसको आगे रीजनरेशन की तरफ लेके जाएंगे। Okay. So you have isolated the protoplast, you have did the protoplast fusion, you have also selected the desirable somatic hybrid. Now the next step is that you have to regenerate your plant. You have to do the regeneration of these hybrid somatic hybrids. So for that basically you have to use specific proper media and specific condition, राइट यानी आपने उसको स्पेसिफिक कंडीशन में यूज उसको इस्तेमाल करके आपने उसको रीजनरेशन की तरफ लेके जाने हैं। ऑफ कोर्स जो हम सिलेक्शन का स्टेप का है उस स्टेप को आप आगे डिफरेंट स्टेजेस पे लेके जाते हैं, इवन केलिस में भी आप उसको अप्लाई करते हैं, और जब आपके पास प्लांटलेट आते हैं तो तब भी आप कंफर्म करते हैं दैट यू डू हैव सोमेटिक हाइब्रिड एंड यू आर नॉट बेसिकली रीजनरेटिंग जस्ट द होमोकैरियन और द अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। लेकिन आपने इसके लिए जो कंडीशंस वगैरह होते हैं, जो मीडिया होते हैं, वो स्पेसिफिक यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। और वो बेसिकली देयर आर इन द लिटरेचर यू कैन फाइंड फॉर डिफरेंट स्पीशीज जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, बट ऑफ कोर्स इफ यू आर डीलिंग विद स्पीशीज जिनके ऊपर किसी ने काम नहीं किया हो, यू विल हैव टू डू सम कुकिंग इन द स्टार्ट। बेसिकली you have to do the cuisine basically, आपने मीडिया को अप डाउन करना होगा, डिफरेंट थिंग्स ऐड करने होंगे, कंडीशंस के साथ आपने मैनिपुलेशन करनी होगी, कैलिब्रेशन बेसिकली करनी होगी ताकि आप सुइटेबल कंडीशन आइडेंटिफाई करें और उसके जरिए जो है तो उसको रीजनरेशन की तरफ लेके जाए। तो यू विल गेट द हाइब्रिड केलाएं, आप केलेस जनरेट करेंगे और फिर आप उससे जो है रीजनरेशन की तरफ ले जाके हाइब्रिड प्लांट जनरेट करेंगे, एंड दैट इज बेसिकली योर अल्टीमेट प्रोडक्ट। यानी जो आपको फाइनली चाहिए वो वही आपके पास हाइब्रिड प्लांट है जो कि आपके पास सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से आया है, ठीक है। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो रीजनरेशन कैपेसिटी होगी वो डिफरेंट होगी डिपेंडेंट कि आप किस किस स्पीशीज को आपस में क्रॉस कर रहे हो, आपस में एक दूसरे से कितने डिस्टेंट हैं, और जो जो कंडीशन चाहिए होंगे वो कंडीशन आप उस हिसाब से जो है तो उसको कैलिब्रेट करना आपको पड़ेगा। और फाइनली जो आपके पास डिफरेंट स्टेजेस में जब आप रीजनरेशन करेंगे तो उसमें कंफर्म करेंगे दैट यू आर
actually reproducing or regenerating the somatic hybrids, and you are not basically regenerating the unfused protoplast or the homokaryon. Okay, so if I summarize this topic, so for the protoplast fusion, basically you have to isolate the protoplast, you have to bring them together and then alter the membrane permeability to do the protoplast fusion through different stimuli, जिसको हम discuss कर चुके हैं, and then you have to do the selection for the somatic hybrids, जो आपके पास unfused protoplast होते हैं, homokaryons होते हैं, heterokaryons होते हैं, उसमें से अपना desirable somatic hybrid आपने सेलेक्ट करना है, and then you have to go for the regeneration, उसको वो specific circumstances, वो specific conditions provide करने और वो specific media provide करने जिसमें आपका somatic hybrid जो है वो survive कर सके. So this is the flow chart and this is basically the summary of this lecture. Okay, so just at the end for my students, जो आप दो previous मैंने वीडियोस शेयर किए, ये वाली और इससे पहले वाली वीडियो, इसको वॉच करने के बाद और इसको अंडरस्टैंड करने बाद, इफ़ यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड अप्रिशिएट दीज स्टेटमेंट्स, उसका मतलब ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एंड देन यू कैन हैव डिस्कशन इन द एग्जामिनेशन for this particular course. Can you see the differences in application of somatic hybrids and cybrids? तो इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर सके, then the importance to be able to select for somatic hybrids, यानी आपने जो सिलेक्शन करनी है क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिर जो सोमेटिक हाइब्रिड है उसके इम्प्लीकेशंस क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उस पर आप डिस्कशन कर सके, दैट शुड बी इम्पोर्टेंट. एंड देन फाइनली इफ यू कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक हाइब्रिड्स. So these are some of the questions जिससे आप अपने concept को टेस्ट कर सकते हैं if you have got this concept or not. Okay students, so all the best. Bon lecture.